Great evening, all my dear friends. So let's start our question answer session with the bang. So let me see some questions in the Q&A session. How to build a confidence if talk is difficult? Awesome. देखिए, whenever you want to communicate anything, talk difficult or easy हो, you need to understand one question. What's in it for me? इसे कहते हैं WIIFM. What's in it for me? देखिए, कोई भी इंसान जब आपसे कम्युनिकेट करता है वन टू मेनी, उसका कुछ तो मकसद होता है यार, कुछ ना कुछ। कभी कभी उसका मकसद टाइम पास करना होता है, ये भी मकसद हो सकता है, टाइम पास करना भी मकसद है। किसी का मकसद होता है नहीं कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बात करनी है, किसी का मकसद होता है कि एक सॉल्यूशन चाहिए, तो दे वांट समथिंग। You need to understand, you need to interpret what exactly they are looking for, and you just need to provide that. तो अभी टॉक डिफिकल्ट है का मतलब क्या है? आर यू नॉट क्लियर कि आपको एग्जैक्टली क्या डिलीवर करना है, या फिर जो डिलीवर करना है वो आपको पता नहीं है? जस्ट लेट मी नो दैट। ये दो ही चीज हो सकती है, एक तो क्या उनका मकसद है आपको पता नहीं है, या फिर मकसद पता है लेकिन वो कैसे डिलीवर करना है पता नहीं है। So just let me know what exactly is the challenge. चलो मैं आपको दोनों को एड्रेस कर देता हूँ. If you really don't know what they want, you can ask them. Simple. You can ask them what exactly you're looking for. You try to understand and you try to deliver. अगर आपको पता ही नहीं है how to go about it, please take help of an expert. किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले लो. आज तो यार गूगल है, यूट्यूब भी है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट चैट जीपीटी इज देयर. So everything is available to you. So you can use those resources. Maybe you can connect with someone and try to get the answer for that, and then you deliver it. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, whenever you communicate, always try to use some examples, case studies or stories. Because normal में अगर आप communicate करने जाओगे, people may not enjoy it. People may not comprehend what you want to share. So try to use more of examples, case studies. It will be very easy for you to share your knowledge. I hope you got the answer. In case you haven't got it, please reframe your question and let me know. Great. So let me go to the next question. Yes. Hello, sir. Wanted to know that in order to gain happiness, we have to forgive someone. But what if that same person tampers with our happiness regularly every day? How to go about it then? Wow. It does feel demotivating to have to deal with them every day, but still, we have to gain that happiness. Amazing. Amazing. So you need to set your boundaries. You need to let that person know what exactly you are looking for and what exactly you are not happy with. जो भी चीज के साथ आप खुश नहीं हो, बताओ यार उसको. शायद ऐसे हो सकता है कि वो इंसान जो भी आपके साथ बिहेवियर रख रहा है, वो इंसान सोच रहा है कि ये एकदम परफेक्ट है. यही तो बिहेवियर मैं सबके साथ रखता हूं. एवरीवन इज बिकमिंग हैप्पी फॉर दैट. सो यू ऑल्सो शुड बिकम हैप्पी. शायद आप अपसेट हो. प्लीज लेट दैट पर्सन नो. And if that person is really loving you, caring for you, that person will try to change. And if not, then you have to change yourself and you have to stay away from that person. You need to change yourself. Are you getting my point? You need to stay away from a person agar wo sunta nahi hai to. Now, if that person is your family member, then there is only one answer for this question is love. Tony Robbins always say that love your family members and change your peer group. Because you can't change your family members. They are going to throw tantrums, they are going to behave in crazy way, and you can't leave them. You have to accept it, you have to love them, and this is how you can manage yourself. That's it. Because family members को तो आप मतलब कुछ बता नहीं सकते. They will always take you for granted. It's a universal law, my dear friends. Few days ago, I was listening to MS Dhoni. MS Dhoni बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे पहले ही बोल के रखती है, घर में आने के बाद जो भी है वो मेरा सुनना है. बाहर तो सबको सुनाता है, सब तेरी सुनते हैं, बहुत हो गया, घर में आने के बाद मेरी सुननी है. और MS धोनी बोलता है जो हुक्म हो मेरे आका. और सब उसको सब सुनना पड़ता है. तो माय डियर फ्रेंड्स,
Coming back to the basic point that at our home, we have to love. That's it. You can't change them. Yeah, you can send them lots of blessings. You can send them tons of blessings. ये कंसेप्ट शायद आपको पता भी होगा, मैंने कल के सेशन में भी आपको शेयर किया था. When you think about someone, you literally send SMS to their subconscious mind. और जो हम बार बार मन ही मन बोलते रहेंगे किसी भी इंसान के बारे में, उनको SMS जाते रहता है और वो इंसान उसी तरह से हमारे साथ बिहेव करता है. There is a huge probability of that. I have so many case studies regarding this. अगर आपको ये कंसेप्ट के और जरा डेप्थ में जाना है तो आप के शिवानी इनके वीडियोस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो ये सब चीजों में एक्सपर्ट हैं, मास्टर ब्लास्टर हैं. उन्हीं से मैंने ये कंसेप्ट सीखा था. सो यू कैन एक्सप्लोर इन डेप्थ, बट बेसिक लेवल पे ये कंसेप्ट. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. एंड वन मोर थिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, टाई इट योर लाइफ टू अ गोल, not to people or the things. This is a quote by Albert Einstein. If you want to become happy, tie your life with a goal, not to people or the things. That doesn't mean you should not get happiness or derive happiness from people or the things. Whatever happiness you're going to derive from people and the things, it has to be the bonus. It should not be the main source of happiness. It should be the bonus kind of a happiness. Main source should be within. And if you have this concept clear, no one can make you unhappy. I hope you got it. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. How to make good friends? Wow. Wow. What a question. My dear friend, I'm not saying you don't make a good friend. I would say you make great friends. If you want to make great friends, if you want to make good friends, if you want to make best friends, you need to work on yourself. Because, my dear friend, your vibe attract your tribe. Same frequency people attract each other. If you are not happy today with your friends, look within. Look within. Don't blame them. Look within. Until and unless you don't change your aura, you don't change your vibration, nothing is going to change. And apart from that, when you connect with the great people, you need to match their aura. Sometimes because of God's grace, sometimes because of blessings of people, sometimes because of great destiny, you attract some phenomenal people in your life. So that time you need to raise your game. That time you need to raise your efforts in order to connect with them. Because you may feel uncomfortable with such kind of great people. You need to be really comfortable and need to work on yourself in that scenario. And apart from that, you need to appreciate people more. जितना हम लोगों को appreciate करेंगे, उतना हमारा bonding उनके साथ अच्छा होगा. Because everyone is hungry for love and appreciation. Everyone. So always try to appreciate people in order to have the great bonding. I'll suggest you one book if you're interested in reading. How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. It's quite big book. अगर आपको वो बहुत बड़ी किताब नहीं पढ़नी है तो आपको मैं एक हैक भी बताता हूँ. By God's grace, in that book हर एक चैप्टर में समरी दी हुई है. हर एक चैप्टर के एंड में 5 पॉइंटर, 10 पॉइंटर, 15 पॉइंटर्स ऐसे दिए हुए हैं. You just read them. At the end of every chapter, you just read those pointers. Even if you read those pointers, how much time it will take? Not more than 5 minutes. Within 5 minutes, you will understand complete human psychology and you can start connecting with people in a fantastic way. And if you take a juice of those pointers, that book, the juice is appreciation. Think about others. Appreciate people. That is the juice of that book. Go through that. You will develop some amazing insights. Let me go to the next question. If the task is new and challenging, how to keep peace in the mind and perform it on the target? Wow, amazing. See, whenever the task is new, that task is new for you. It is not new in the world, isn't it? That task must have been completed by a number of people. You may not be knowing them. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो टास्क को ऑलरेडी फुलफिल किया है. Try to connect with them. Even if you don't know them, you can search online and you can connect with them and try to understand the secret behind that task. It is called as modeling.
इट इज कॉल्ड एज मॉडलिंग. सिंपल है यार. समझो हम लोग ट्रेकिंग को जा रहे हैं. वी आर इन हिमालयास. बाय द वे, आई नेवर बीन टू हिमालयास. वन डे आई विल गो देयर फॉर श्योर. हु नोज, वी विल गो टुगेदर. एनीवेज, सो सपोज वी आर इन हिमालयास और हमें कोई ट्रेक करना है वहां पे और हमें पता नहीं है. सो व्हाट वी डू इन दैट सिनेरियो, टास्क इज न्यू and we need to complete it in a great way. So what we do? We simply hire one expert. वो गांव का कोई बंदा रहेगा जो हर दिन रात वहां पे ट्रैवल करता है. उसको पता है सब कुछ. कहाँ पे शेर होता है, कहाँ पे सांप होता है, कहाँ पे बिच्छू रहेगा, कहाँ पे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. ही विल टेल यू एवरीथिंग. तो why to apply your own mind? Why to reinvent the wheel? व्हील ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका है भाई. व्हील का इस्तेमाल कर लो. तो उसके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज है. सो यूज हिज एक्सपर्टीज. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. whenever you start a new task, always do research. You know what? ये अभी मैं बहुत आसानी से आपको बोल रहा हूँ यार, लेकिन ये कंसेप्ट सीखने के लिए आई इन्वेस्टेड अराउंड 50,000 रुपीज इन 2015. आई डिड वन कोर्स नेम्ड एज पथिक इन मुंबई. जो कोर्स में 13 वीक्स का कोर्स रहता है. जो कोर्स में हमें बताया गया था कि फर्स्ट 1-2 सेशन में उन्होंने हमारा गोल सेट करके ले लिया. और गोल सेट करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको 10 लोगों का इंटरव्यू लेना है. जो भी मेरा गोल है, वो गोल जो लोगों ने ऑलरेडी अचीव किया है, ऐसे 10 लोगों का मुझे इंटरव्यू लेना है. और इंटरव्यू लेने के बाद मुझे उसको स्ट्रेटेजीज जो लोग उन्होंने फॉलो की है वो सब लिस्ट डाउन करनी है. और लिस्ट डाउन करने के बाद मुझे पता चलेगा वो 10 लोगों ने वो गोल को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया था, ऑलमोस्ट 70 to 80% स्ट्रेटेजीज आर इक्वल सेम. तो बाद में वही स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो, बात खत्म. खुद का दिमाग लगाने जागे तो ट्रायल एंड एरर में टाइम, एनर्जी, मनी को वेस्ट कर बैठेंगे. I hope you got the point. And be, you know what, be absolutely shameless in asking for help. It is so important. There is no point, being very much concerned कि यार कैसे पूछूं, मैं फुद्दू लगूंगा, ये होगा. Nothing. Just go there and ask for help. Rather, asking for the help is a sign of a strength. It's not a sign of a weakness. I always take the help. Whenever I stuck, whenever I need any kind of support, I take support from anyone. Great. So do you have any questions, Sachin ji? Or you just raise your hand to just give me the confirmation? Okay. Yeah, you can raise your hand if you want to talk to me, if you want to ask any question. Okay. So I'll unmute you. Just give me a few seconds. Go ahead, Sachin ji. Hello, sir. How are you? I'm top of the world, yeah. Always. नहीं, जब when the task is difficult and we don't know the task, there is a disturbance in mind, so we cannot keep cool. So how to keep ourselves cool in that scenario? कूल रखने के लिए देखिए, आपके माइंड में हलचल मची हुई है. क्यों पता है? बिकॉज यू आर एंटरिंग द टेरिटरी ऑफ अननोन. If this is a regular process, so how to deal with it? That is what I'm saying. When you are doing a new task जो आपको पता ही नहीं है, see there is something called as fear of unknown, and because of fear of unknown you are in pressure. Your mind is Right. not stable. What I'm saying, ये task sir आपके लिए new है, but this task is not new for some other experienced person. So you try to find who can help you in this scenario, who already did this work earlier. You need to find that, and once you find it, then it will be very easy for you to tackle that situation. बिकॉज वो बंदे ने ऑलरेडी वो पाथवे को पार किया है. वो पाथवे पे कहां पे गड्ढा आता है, कहां पे कीचड़ है, कहां पे फूल है, कहां पे खाने को मिलेगा, उसको सब कुछ पता है. तो उससे आप सपोर्ट ले लो, बात खत्म. लेकिन सर अगर रेगुलर फ्यूचर है, वो रेगुलर फीचर है, इट गोन्स ऑन मंथ्स, तो हाउ टू डील विथ इट, माने उसको पीसफुली कैसे टैकल करें, वो तो सपोर्ट अगेन यू मिलेगा. नीड टू हैव, अगर ये रेगुलर बेसिस पे चैलेंज है, देन आई वुड से टेक हेल्प ऑफ वन मेंटर ऑन रेगुलर बेसिस. आपके जिंदगी में कोई तो एक कोच या मेंटर होना चाहिए जो आपको कदम कदम पे जब आप लड़खड़ाएंगे वो आपको सपोर्ट करेगा. शायद वो आपका बॉस हो सकता है, शायद वो कोई दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा हो सकता है, शायद जो आप काम करते हो वही काम शायद कोई और बैंक में या फिर कंपनी में चलता है, वो लेवल का मैनेजर हो सकता है. यू नीड टू बिल्ड दैट नेटवर्क. इफ यू गो ऑन लिंक्डइन, यू कैन बिल्ड सच नेटवर्क. Maybe what you can do,
If it is a technical topic, try to develop some expertise in that topic so that you can Right. tackle the situation really well. Try to read some amazing books in those arena so that you are equipped to handle those challenges. Because I have shifted from ops to corporate sales, so totally topic is totally different. What Yep. which one I was dealing before. Yep. तो उसमें क्या होता है, तो रेगुलर हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, तो काम भी हो रहा है, लेकिन माइंड पीसफुल नहीं रह रहा है। मेन माइंड माने घर में भी प्रेशर का सिचुएशन क्रिएटेड रहता See, when it comes to the sales, have you ever taken any training on sales? है। नो। That is the big challenge. See, when it comes to the selling, I'll tell you. By the way, आपने कल जो हमारी ट्रेनिंग अटेंड की तो उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताए हैं. वही ट्रिक्स आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो. एंड along with that, I would suggest you start reading some books and videos on selling. There are so many amazing books. See, I will suggest one or two books over here. One of the book is a international bestseller book is How to Sell Anything to Anyone by Joe Girard. How to sell anything to anyone. So ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक चीज के लिए कोई भी सेलिंग हो सकता है. How to sell anything to anyone. You can read this book. Even there are some amazing books by Brian Tracy also on the sales. There are some amazing books by Zig Ziglar also on selling. ओके। So you try to read this book so that you will open up your mind. And one more thing you need to do. देखिए हर एक बंदे का सेलिंग का एक टारगेट होता है, isn't it? एक मंथ का टारगेट होता है, कुछ क्वार्टर का टारगेट होता है. तो मैंने आपको एक टेक्निक कल के सेशन में एक्सप्लेन की थी, दैट इज अ विजुअलाइजेशन टेक्निक. तो मैं आपको सजेस्ट राइट। करूंगा जो भी आपका क्वार्टर का टारगेट है या फिर मंथली टारगेट है, वीकली टारगेट है, वट एवर इट मे बी, प्लीज विजुअलाइज दैट टारगेट बिफोर गोइंग टू स्लीप. रात को सोने से पहले वो टारगेट आपका पूरा हो चुका है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको इंसेंटिव मिल रहा है, ये सारा जो कंसेप्ट है आप विजुअलाइज कीजिए. एक बार आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया कि आपका टारगेट पूरा होता है, आप हर बार पूरा करते हो, सो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सेलिंग करवा लेगा. इवन आपकी जिंदगी में ऐसी किताबें आएंगी, आपकी जिंदगी में ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको गोल तक लेके जाएंगे. राइट। इट इज वेरी सरप्राइजिंग सचिन जी. यू नो व्हाट, मैं मेरे कनेक्ट में जो जो सेलिंग वाले बंदे आ रहे हैं, दे आर इन ट्रेमेंडस प्रेशर ऑफ टारगेट. एंड अनफॉर्चुनेटली if I ask them, क्या आपने कभी सेलिंग में ट्रेनिंग ली है, and they always say no. I wonder what the hell company is doing. Whichever company you're working for, what the hell HR is doing. एक्चुअली I'm प्रैक्टिकल really देयर वाज नो surprised. ट्रेनिंग। I'm really प्रैक्टिकल देयर वाज surprised. नो मतलब, ट्रेनिंग। sorry. प्रैक्टिकली कोई भी कंपनी इतना ट्रेनिंग पे अभी मैंने इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, नहीं कर रहा। No, that is a big challenge. Actually, I don't understand. See, most of the companies give the technical training, मतलब प्रोडक्ट की ट्रेनिंग. अरे राइट। भाई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग यार, मतलब ऐसा. I think I must make video on this. This is a fantastic topic. My God. यार, जब जब कोई बंदा सेलिंग को जाता है ना सर, मतलब कोई भी, मतलब मैं आप कोई भी, हम लोग जब सेलिंग को जाते हैं, व्हेन यू वांट टू सेल समथिंग, वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नॉलेज है ना, उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ 10% है. इन द टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सेलिंग, in the terms of impact of selling, it is only 10%. 90% is your conviction, who you are as a human being. That is 90%. Because राइट। whenever people buy something, first of all they buy you, then the product. राइट। So how you can make yourself charismatic, how you can have a smile on your face which is genuine, how you genuinely care about some people, that is what going to click the sale. दैट्स इट। Yep. And you start reading these books, it can help you a lot to have much more clarity how to be a great selling person. राइट। And one more technique I will share with you. ये आपको मैंने ऑलरेडी शेयर की है, बट ये अलग स्टाइल में कैसे इस्तेमाल करनी है. Whenever you are going for a meeting, जो भी बंदे के साथ आपकी मीटिंग है, भले आप उसको पहचानते हो नहीं पहचानते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उसको दुआएं भेजो. Before going for any meeting, please send blessings to that person. वो बंदा आपके फेवर में आएगा. I'm telling you, that person may be a small person, big person, doesn't matter. If you use this technique, that person will be in your favor. मैक्सिमम क्या होता है, लोग इसमें डरते रहते शिवानी हैं. का टेक्निक। सॉरी.
सिस्टर शिवानी का स्ट्रेटजी है। This is a powerful technique. Most of the people, what they do exactly opposite. मतलब सेलिंग के लिए जा रहे हैं और डर रहे हैं, अरे यार ये क्या बोलेगा यार, ये तो बड़ा इंसान है यार, कुछ समझ में नहीं आता यार, ये तो मेरी तो पुंगी बजा देगा यार, मैं क्या बोलूं यार, यार बॉस का भी प्रेशर है यार, अरे क्या यार, कुछ यार, क्या यार। ये प्रेशर के साथ अगर आप सेलिंग को जाएंगे, आपका वाइब्रेशन ऑलरेडी थर्ड क्लास बन चुका है। ये थर्ड क्लास वाइब्रेशन के साथ फर्स्ट क्लास सेल कैसे होगा यार? You need to go with a lot of conviction, great smile on your face. And for that, again, you can use the same technique. Thank you so much for fantastic sales meeting. My customer enjoyed a lot and God bless you, my customer. Same technique जो हमने सीखी थी, थोड़ा सा ट्विक करके अभी मैं आपको बता रहा हूँ. I hope you got it. थैंक्स। Great. Thank you so much for asking these fantastic questions, sir. God bless you. So let me go to next question. I tried pondering on your quote of the day, which is you have to pay upfront in many ways to experience the priceless moment. I wasn't able to understand much. Please, can you throw some light? Oh wow, I can throw variety of lights on that. Oh my God, it's such a fantastic concept. See, we all want to experience some amazing moments, right? We all want to do something phenomenal, right? And when I say priceless moment, what is the meaning of priceless? Priceless means it is a kind of moment which you die for. You always want that moment. You want to cherish that moment. It is a kind of a golden memory. But my dear friend, in order to create that moment, that specific moment, you need to pay a lot of price. Now, what is this price is all about? Suppose I'll take my example. Suppose I want to create a phenomenal success story. Okay. Suppose I want to create a phenomenal success story for anyone. For that, I need to train that person. But in order to train that person at a peak level, I need to work hard on myself day in and day out. I need to work on my tonality, on my knowledge, my body language, and so many things every single day. And when I do it consistently, day after day, week after week, month after month, I keep on doing that. Then only when I meet someone, I create phenomenal impact. See, आपने मुझे बहुत अच्छा एक फीडबैक दिया. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट कि 6 घंटे की हमारी पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग 6 मिनट में खत्म हो गई, ऐसे लगा. इतना मजा आया मुझे. दिस इज व्हाट यू सेड एंड दिस इज अ प्राइसलेस मोमेंट फॉर यू, मी एंड फॉर यू ऑल्सो. Is a priceless moment, and in order to create this priceless moment, oh my God, I have been working hard on myself like crazy. I don't remember when last time I watched any movie. I don't remember last time when I just hang out anywhere just for the sake of time pass. I don't remember that. Every single day I'm putting my heart and soul and only having one obsession. How can I create massive success story? That is my obsession. Whenever I meet people online, offline, how can I create massive impact? This is the only burning question I have in my mind. And for that, I invest like crazy. I keep purchasing books. I keep purchasing different courses. I attend so many of seminars, webinars, and whatnot. And then after paying so much of price, I create such kind of priceless moments. I hope you got the answer. Trust me, the feedback you gave, that is what I was dying for. I've been telling everyone, my dear friend, attend my 6 hour training, you will experience magic. Most of the people think like, यार 6 घंटे में क्या होगा यार, 6 घंटा यार ऑनलाइन जूम के ऊपर 6 घंटा, अरे बाबा कौन बैठेगा यार, बोर हो जाऊंगा यार, मेरे को नहीं अटेंड करना है बाबा. मैं उनको बोलता हूँ, अरे बाबा आ जाओ, ट्रेनिंग अटेंड करो, पैसा मत दो मेरे को, ट्रेनिंग अटेंड करो, मैजिक एक्सपीरियंस करो, बाद में सोचो पैसा देने का. बट स्टिल पीपल थिंक 6 घंटा. And you attended my training, you gave me this fantastic feedback. Now I'm sharing your feedback to tons of people. See what people are saying about the training, and you're still fearing कि 6 घंटा में कैसे बैठूंगा, 6 hours is too much. It's nothing. You could have attended till 10 p.m. on Sunday. I know that people enjoy it, but in order to create this moment, I need to pay the price. I hope you got it. Just say yes in the chat box if you got the answer. Amazing. Thank you so much for this fantastic question. I really appreciate that.
Any other question, my dear friend? Go ahead, my dear friends. Raise your hand. जो भी आपका सवाल है बिंदास हाथ ऊपर करो, पूछो जो भी आपको पूछना है. Otherwise, put your questions in the chat box. दोस्तों, जब आप सवाल पूछते हो, आपके सवाल की वजह से बहुत लोगों का फायदा होता है. एंड आई अपलोड दिस क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन यूट्यूब, एंड पीपल अक्रॉस वर्ल्ड, आई एम नॉट जोकिंग, पीपल अक्रॉस वर्ल्ड watch these videos, and they give blessings to the people who answer, that me, and they give blessings to you also, the person who is asking that question. So both of us get tons of blessings, so make sure you ask some questions. It is a great opportunity. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Just raise your hand or put your question in the chat box. So Sachin ji, go ahead, ask your question. Unmute yourself. अपने जो पुराना मेमोरी स्टोर्ड है तो उसको रिप्लेस नए मेमोरी से कैसे करें जो अभी का प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट है, तो Okay. हाउ वी कैन डू दैट? Okay. Amazing question. Do you mean to say some pathetic memories जो हमें बहुत तंग करती नो है? पैथेटिक, नॉट पैथेटिक. Then Means what is now required, previously different thing was required, so how to replace and build up the new things okay, in mind. okay, okay. Yeah. So you mean to say how to develop some new skills, Right. right? So it's so simple. देखिए, मैं आपको एकदम सिंपल फंडा बताना चाहता हूँ जो अभी मैंने बताया ऑलरेडी. आप अभी जो फील्ड में नए फील्ड में आए हो, वो फील्ड में जो लोग बाप लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी या फिर कर चुके हैं, उनसे आप दोस्ती करो. वही लोग आपको सारे सीक्रेट्स बताएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सचिन जी, Right. आपको आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंप्रूवमेंट करना है. अगर आप खुद का दिमाग लगाते रहेंगे ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कंप्लीट गेम. लेकिन आपने जब 6 घंटे का मेरा ट्रेनिंग अटेंड किया, तो आपको पूरा गेम समझ में आया होगा, यार कितना मस्त गेम है, स्टार्ट टू एंड कैसे गेम खेलना है. लेकिन Right. सर, ये 6 घंटे का आइटम बताने के लिए 15 से 20 साल से रिसर्च कर रहा हूं. 500+ सेमिनार्स वेबिनार्स डिलीवर्ड किए हैं, 25,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, बाद में 6 घंटे का गोल्डन नगेट बाहर निकला है. तो आप अगर खुद से करना करना के लिए ट्राई करोगे, रिसर्च करोगे, कितना टाइम लगेगा सर? Huge time. ह्यूज टाइम. सो लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी विल बी वेस्टेड ऑफ योर्स. सो इसीलिए हमें हर बार क्या करना चाहिए, जो जो भी स्किल हमें डेवलप करनी है, जो बंदे के पास वो स्किल ऑलरेडी है, गो एंड मीट दैट पर्सन, अटेंड दैट सेमिनार वेबिनार, और मे बी रीड द बुक, वॉट एवर, एंड ट्राई टू लर्न व्हाट एग्जैक्टली टू डू. इट्स That's it. वेरी सिंपल सर. देखिए सर, हमें जिंदगी में एक रिसोर्स बहुत लिमिटेड मिला है, वो है टाइम. बहुत कम टाइम में, इन इन लिमिटेड टाइम वी हैव अनलिमिटेड डिजायर्स. तो ये लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड डिजायर्स तभी फुलफिल हो सकते हैं सर, व्हेन वी स्टार्ट परचेसिंग द टाइम. हमें टाइम को परचेज करना चाहिए. अभी परचेज करना चाहिए मतलब क्या? देखिए, आपने उस दिन 6 घंटे का वर्कशॉप अटेंड करके टाइम को परचेज कर लिया, जो खुद से अगर आप ट्राई करने जाते तो आपको कितने सालों लग जाते. लेकिन एक दिन में पूरा गेम हमने कवर कर लिया, और ये ट्रेनिंग आपको मिलते ही रहेगी. इवन नाउ यू आर परचेसिंग योर टाइम. अभी आपने आपका कीमती समय यहाँ पे डेडिकेट किया है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, और यहां से जो भी नॉलेज आपको मिल रहा है, यू आर एक्चुअली सेविंग योर टाइम, इजंट इट? That's it. सो दिस इज व्हाट यू Sir, नीड टू डू ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. so how to sir माने कि manage the work life and family life? Okay, it's a different question. It's a different question Right, again. sir. You know what? You can manage both things only when you have the clarity. I attended one of the workshop, one of my mentor, Rajiv Talreja, and he was talking about and life, A and D, and life. Now, what is the meaning of and life? And life मतलब ये भी और ये भी. बहुत सारे लोगों की और लाइफ होती है, और मतलब OR, और ये या फिर ये. हमें और लाइफ नहीं जीनी, हमें एंड लाइफ जीनी है. मतलब करियर भी जबरदस्त चाहिए, फैमिली लाइफ भी जबरदस्त चाहिए, एंटरटेनमेंट भी जबरदस्त चाहिए. सो सब जगह पे हमें एड ऑन करना है, इसलिए हमें एंड लाइफ को जीना है. सो हाउ टू लिव द एंड लाइफ? इट Right. इज वेरी सिंपल. देखिए,
आपके जिंदगी में सबसे मेजर जो कंसर्न होगा या फिर मेजर गोल जो होगा वो आपका करियर गोल होगा, राइट? दैट इज गोइंग टू बी Right. अ करियर गोल, बिकॉज जब तक वो करियर गोल आप फुलफिल नहीं करोगे, आप फैमिली की केयर कैसे करोगे? बच्चे की मांग, Right. बच्चे तो मांगते रहते, डैडी ये चाहिए वो चाहिए, वाइफ भी बोलती है मेरे को वहाँ यहाँ जाना है वहां जाना है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। सो फॉर ऑल दिस नीड्स यू नीड मनी, एंड इन ऑर्डर टू नीड फुलफिल द नीड ऑफ मनी यू नीड टू फोकस अ लॉट ऑन योर करियर। तो Right. करियर पे आपका ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम एनर्जी इन्वेस्ट होने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब आप घर पे आते हो, व्हेन यू कम होम, यू नीड टू हैव वन एजेंडा, दैट दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर माय किड्स एंड फॉर माय वाइफ। इट मे बी हाफ एन आवर, इट मे बी 1 hour, बट यू आर गोइंग टू गिव योर हार्ट एंड सोल ओवर देयर। तो Right. आपको खुद को बताना है कि चल ठीक है, मैंने जॉब कर दिया, जॉब जो भी मैंने मेहनत करनी थी कर दी, नाउ आई नीड टू डिवोट दिस हाफ एन आवर 1 hour टू माय चिल्ड्रन, टू माय फैमिली मेंबर्स। और अभी आपका पंगा होने का, जो भी आपका पंगा चल रहा है, उसका एक ही रीजन है सर, आपने फील्ड चेंज की है। सो यू हैव टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, द फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट ट्रेनिंग यू, एंड Right. हेंस यू आर इन ट्रमेंडस प्रेशर। वो ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे और ऊपर से आउटपुट भी मांग रहे हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। So I can really sympathize with you. I can really understand what must be you must be going through. लेकिन जो मैं आपको किताबें बता रहा हूँ, जो सिस्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप सिस्टम फॉलो करना शुरू करेंगे, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक। Right. ग्रेट, Thanks. ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन सचिन जी, थैंक यू सो मच। सो हाउ टू डील विद द स्ट्रेस एट वर्क प्लेस? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो वहां से एक चीज मेरे को पता चल रही है कि कंपनीज में, कॉर्पोरेट में आपको ट्रेनिंग देंगे कि नहीं देंगे, नो गारंटी, लेकिन आउटपुट आपसे 200% मांगेंगे। मतलब 10% की ट्रेनिंग नहीं देंगे, आपके ऊपर 10% इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मांगेंगे आउटपुट 200%। इज इट ट्रू? इट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये कैसे करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। If you start taking 100% responsibility for your life, then only you can perform at the peak level. देखिए यार, आपको जॉब में जो भी स्किल्स वगैरह जो भी डेवलप करनी है, तो वो आपको खुद के बलबूते पे करनी होगी। यू कैन नॉट रिलाई ऑन द कंपनी because they may or may not provide you that training. So you have to take that responsibility. Train yourself. And one more thing, I still remember from the one of the training I attended by Jim Rohn, online training वीडियो मैंने देखा था। जिम रॉन कहते हैं, इफ यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्च्यून, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। जो लोग खुद के ऊपर मेहनत करते हैं ना, वो फॉर्च्यून कमाते हैं, और जो जॉब और बिजनेस में मेहनत करते रहते हैं, दे जस्ट सर्वाइव इन देयर लाइफ। लेट मी रिपीट, द पीपल हु वर्क हार्ड ऑन देमसेल्व्स, they collect fortune in their life, they become so successful. And the people who work hard in the job and business, they just merely survive। उनको कोई नहीं पूछता, ना उनका कभी प्रमोशन होता है तो 4-5 साल में होता है, और उनकी जिंदगी में तो ऑर्डिनरी रहती है। एंड दे जस्ट लिव फॉर वीकेंड्स, वो वीकेंड के लिए जिंदा है। आई नो सम ऑफ माय फ्रेंड्स, आई नो सम ऑफ द पीपल, rather 80 to 90% people in the world are living for weekends। सैटरडे कब आएगा यार, संडे कब आएगा, अरे यार संडे, वाह मंडे को होली है यार, 2 दिन छुट्टी यार, मजा आएगा मजा। दिस इज व्हाट पीपल आर लिविंग फॉर। They're living for weekends and holiday, that's it। बाकी के दिन वो मर रहे हैं। they are dying every day, absolutely dying। और ये मैं नहीं कहता यार, ये रिसर्च कहता है। ये दुनिया में मैक्सिमम हार्ट अटैक वेनेसडे को आते हैं, मैक्सिमम हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड ऑल दिस थिंग्स। व्हाई? ये स्टेटस है, ये डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स है। बिकॉज इतना प्रेशर लोगों के ऊपर है, पंगा हो जाता है। और प्रेशर क्यों नहीं हैंडल कर पाते? बिकॉज स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाते। देखिए, अभी आपके सामने एक चैलेंज है, ठीक है, उसकी लेवल इतनी है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, दिस बिग चैलेंज, और आपके अंदर पावर इतनी सी है।
आपकी पावर इतनी और चैलेंज इतना, तो प्रेशर तो फील होगा ना यार। पावर इतनी और चैलेंज इतना। लेकिन जब आपकी पावर ये कर दोगे ना ये, तो आप बोलोगे क्या है ये, आप उसको फूक मार के उड़ा दोगे, उसको फ्लाइंग किस देके बोलोगे लव यू बेबी, बाय बाय चैलेंज। बिकॉज आपका आपने दायरा बड़ा कर दिया है, बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। I'll not take a name of a company. Few days ago, I've been to one of the training. एक कंपनी के लिए मैं गया था। बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स वहां पे थे। एंड आई आस्क्ड सम ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स, ये किताबें पढ़िए क्या, ये किताबें पढ़िए क्या। आई वाज सरप्राइज्ड, none of them raised the hand, none of them. And those people are the HR people. Oh my God. You are in HR and you don't know anything about the human resource, leadership and all. So how you going to develop your people? Big challenge. So बहुत कम लोग, दुनिया में बहुत कम लोग खुद के ऊपर मेहनत करते हैं. And this is what I can say. If you want to handle stress in a beautiful way, change your game, work hard on yourself, and this is how you can manage the stress. Yeah, one more book I would recommend to all corporate people. This is a book by Radhakrishnan Pillai, Corporate Chanakya. Read this book, Corporate Chanakya by Radhakrishnan Pillai. How you can apply Chanakya Niti in your corporate. But obviously if you really need to be successful anywhere, you really need to work hard on yourself. अनफॉर्चुनेट चीज बताऊं दोस्त, एक बार मंथली पेमेंट शुरू हो जाता है ना, मंथली पेमेंट, और बहुत तगड़ा पेमेंट शुरू होता है ना, आदमी की जो भूख होती है ना कुछ करने की, खत्म हो जाती है। कंप्लीटली खत्म हो जाती है, उसको कुछ नहीं करने की इच्छा होती है। आई हैव वर्कड इन अ कॉर्पोरेट फॉर 6 long years एंड आई हैव सीन पीपल फ्रॉम वेरी क्लोज मार दिया है खुद के भूख को, खुद के सपनों को मार दिया है, गला घोट दिया है वो सपनों का। टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन सपनों को आग लगा दी गई है। क्यों? पर मंथ पेमेंट आ रहा है, मस्त है, लाइफ जबरदस्त है। आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज इन वॉशरूम, फनी इंसिडेंट। आई वॉज इन वॉशरूम एंड आई वॉज पीइंग विथ वन ऑफ माई मैनेजर। सो मेरा मैनेजर बाजू में था, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट का था मैनेजर, very senior manager, and I was with that person, and we were in washroom, and that person of high profile, he was counting the days. आज वेनसडे, कल थर्सडे, बाद में फ्राइडे यार, बस 2 दिन, बस 2 दिन. If managers are thinking like this, what is going to happen to that company? God bless that company. This is what I can say. I hope, my dear friends, you are getting the crux, and it is everywhere. It is everywhere. So you need to bring the charm through working hard on yourself. I know it is boring यार, मतलब डे टू डे जो जॉब होता है, जॉब गोइंग लोग होते हैं, बोर हो जाते हैं वही काम कर करके, एंड हेंस यू नीड टू क्रिएट अ स्पाइस इन योर लाइफ बाय वर्किंग हार्ड ऑन योरसेल्फ एवरी डे, मिनिमम 30 minutes, minimum 30 minutes, or maybe maximum 1 hour. If you can start working hard on yourself, sometimes skills, your mindset, my God, you will say love you Samir after a few months for this advice. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. So, sir, on a day when you don't have anything scheduled, how do you distribute and make sure you good use of your time? Oh my God. You know what, my dear friend, क्या बोलूं यार? You know, I request that God, that Almighty, you know, to take away sleep from my life. I don't want to sleep. I really don't want to sleep. I really pray to God for that. Because मेरे पास इतने सारे projects है, इतना सारा काम है, so much I want to learn. This sleep is coming in my way. Whenever I go to sleep, I feel like क्या है यार, ये किसने नींद बनाई यार? ये नींद का आइटम नहीं होता तो 6 घंटे में और कुछ कर लेता. So trust me, whenever I don't have any training and all, I have so many things to do. My cupboard is full of books. My laptop is full of courses.
I invested like around 20 lakhs till now. In lockdown itself, I invested around 10 to 12 lakhs in different courses. And I haven't watched all of them. बहुत सारे courses अभी pending है, बहुत सारी किताबें pending है. And I still keep on purchasing different books, keep on watching seminars, webinars. I'm crazy because बहुत कुछ है यार सीखने के लिए. Always remember, more you learn, more you earn. So I keep on updating myself, keep on learning. So I really don't have free time. And I think I just take rest during that sleeping hours. जो सोता हूँ वही मेरा entertainment है, वही मेरा stress buster है, वही मेरा movie है, वही मेरा सब कुछ है. I think in my dreams also, or maybe in during my sleep also, my subconscious is working on something else. It is connecting with the divine और बहुत कुछ हो रहा है. I'm crazy, my dear friends. I'm crazy. I'm absolutely obsessed about helping people and the human psychology and how I can help people. I'm absolutely obsessed about that. So I really don't have free time. Yeah, so there is one more question. Company prefer multitasking candidates to save money or don't like multitasking at a time? I really appreciate that, my dear friend. I know that company, but not all companies. If you go for bigger companies, उनका मतलब विजन एकदम क्लियर होता है और वो एक बंदे को स्पेसिफिक टास्क ही देते हैं. एंड इन केस आपको बहुत सारे टास्क दिए हुए हैं, यू कैन टॉक टू योर मैनेजर, यू कैन टेल दैट पर्सन दैट बॉस, in order to be productive, I need to work on one project at a time. And there are tons of videos and you know blogs available that why multitasking is bad, why multitasking is not great. You can show to your management, you can show to them. और मल्टीटास्किंग तभी होती है मेरे दोस्त जब कंपनी में सिस्टम्स प्लेस में नहीं है. तो सबको सब कुछ करना पड़ता है, कभी भी कुछ भी हो जाता है. ये कभी भी कुछ भी होने का रीजन यही है, सिस्टम प्लेस में नहीं है. एंड देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स इन द सिस्टम्स. In order to make system in great alignment, maybe you can suggest them about one system which is called as 5S system. ISO सर्टिफिकेशन वाले जो लोग होते हैं वो भी सिस्टम डिफाइन करके देते हैं. इवन सब क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाले लोग हैं वो भी अच्छे से सिस्टम डिफाइन करके देते हैं. एंड maybe you can suggest your boss and team and company for that so that you can avoid multitasking. You need to be very clear, otherwise it will be very difficult to work in that company. How to stay happy at work irrespective of situation? The one of the simplest way by which you can become happy, my dear friend, is to be grateful. जिंदगी में कितना भी बड़ा पंगा हो जाए यार, ऐसी ढेर सारी चीजें रहती है जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए. कुछ ना कुछ तो रहता ही है यार जिंदगी में जिसके लिए आप तहे दिल से थैंक यू कह सकते हो. ऐसी ढेर सारी चीजें हैं यार आज हमारी जिंदगी में, जो चीजें पाने के लिए बाहर लोग मर रहे हैं. दे आर डाइंग एवरी डे, बट यू आर ब्लेस्ड विद अबंडेंस इन दोज थिंग्स. बी ग्रेटफुल टू गॉड. एंड आई वुड से यू कैन मेक अ लिस्ट, बिग लिस्ट ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स. बचपन से लेके आज तक जितने भी आपके छोटे मोटे अचीवमेंट्स हैं उनका एक लंबा चौड़ा लिस्ट बना दो. मिनिमम 100+ थिंग्स उसमें होनी चाहिए. मिनिमम 100 बनाने के लिए शायद आपको 1-2 हफ्ते लग जाएंगे. Make that list and always carry it with you. So whenever you feel down and unhappy, you can look at the list and you can be really proud of yourself. You can be really happy. Wow, how blessed my life is. Unfortunately, human brain ऐसे काम करता है, अच्छी चीजों को वो साइडलाइन कर देता है और जो लफड़े हुए हैं, जो पंगे हुए हैं, उनको ही याद रखता है. ऐसे क्यों होता है? बिकॉज जो लफड़े हैं, पंगे हैं, वहां पे इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं. और जो इवेंट में ज्यादा इमोशंस है वो ज्यादा देर माइंड में रहता है. और अच्छी मोमेंट्स के साथ ज्यादा इमोशंस हम लोग अटैच नहीं करते, हम लोग उसको ग्रांटेड पे लेते हैं. और बुरे मोमेंट्स के साथ ज्यादा इमोशन अटैच हो जाते हैं, फिर वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है. एंड दिस इज हाउ यू बिकम अनहैप्पी. सो यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड. वी आर ऑलवेज ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. रोज सुबह उठने के बाद मैं बार बार खुद को बोलता हूं यार, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. ट्राई इट. आप भी ये अफर्मेशन करना शुरू कीजिए. आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. एंड स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, हाउ ब्लेस्ड यू आर. You will become happy. Yeah, maybe you can chant the name of a god if you are spiritual, if you love any god, saint.
You can chant their name, by which also you can become happy. But gratitude is the simplest of the stuff by which you can become happy. And you know what? उस दिन ट्रेनिंग में मुझे शेयर करने का मौका नहीं मिला. खुद ये टूल विराट कोहली ने इस्तेमाल किया है, ग्रेटिट्यूड. 3 साल के लिए बंदा आउट ऑफ फॉर्म था, एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं हुई थी. सब लोग बोल रहे थे ये खत्म हो गया, ये बुड्ढा हो गया, उसको टीम से निकाल दो. एक हफ्ते के लिए, नॉट एक हफ्ते के लिए, काइंडली फॉरगिव मी, फॉर 1 मंथ ही टुक ब्रेक फ्रॉम क्रिकेट फॉर 1 मंथ. ही वॉज वर्किंग ऑन अ फिटनेस, लेकिन क्रिकेट के ऊपर कुछ नहीं काम किया. 1 महीने के लिए सिर्फ ग्रेटिट्यूड में था. एंड व्हेन ही जॉइन द टीम इन एशिया कप 2022 in Dubai, he was counting the blessings. He was grateful, and hence he delivered the peak performance. By the way, there is one amazing book named as 1 Minute Manager. छोटी सी किताब है, 70 पेजेस की, 1 Minute Manager. In that book, it has been mentioned, जो लोग खुद के जिंदगी में खुश रहते हैं, खुद के लिए खुश रहते हैं, वो बहुत प्रोडक्टिव लोग रहते हैं. And don't wait that your manager or HR or your colleague will come to you and they will try to make you happy. You have to take that 100% responsibility and you need to make yourself happy. There are a variety of ways by which you can handle the stress and you can become happy. You can sing songs, you can sing bhajan, you can do chanting, you can do gratitude. Variety of things are available by which you can become happy. Great. Go ahead, my dear friends. Let me know if you have any question. Still, we have around 5 to 10 minutes. Okay, now let me read this question. I am a person who reflects back, energy coming off another person like a mirror. But now I realize that I don't know what my true energy personality is. How can I possibly figure that out? Uh, by the way, you already connected with me. You already joined our training of public speaking, subconscious mind-based public speaking. We are going to do one-to-one session. We meet yesterday and I told you what kind of pattern you have got. Did it resonate with you? Whatever I said about your personality, अभी सबके सामने मैं नहीं बताना चाहूंगा अभी personality क्या है and all, but did it resonate? कुछ conviction आया जो भी मैंने आपके साथ share किया about your personality? I just looked at your left thumb for how many seconds? For 1 to 2 seconds, and I told you what kind of pattern you have got. Yep. You are saying right now you 100% resonated with that. So that is your personality, my dear friend. And I'm going to share a lot many things with you because that day I just saw your left thumb. I'm going to go much more in depth of your personality and I'm going to share so many of things you don't know about yourself. वो हम लोग सेशन बहुत जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग डेज. वी विल ट्राई टू कनेक्ट मे बी ऑन अ जूम कॉल लाइक दिस और मे बी ऑन अ फोन कॉल and I will share you everything, what kind of gifts you have got. And I just want to tell you, my dear friend, you are blessed beyond imagination. You are absolutely phenomenal. You don't know what kind of magic you have got or what kind of amazing things are going to happen in the future. I'm not saying it to motivate you. I'm saying it as per your patterns because आपके patterns बहुत rare patterns हैं. सबके पास, even मेरे पास ऐसे patterns नहीं है. I'm telling you. Even I don't have these patterns, but you have it. But unfortunately, you are not aware about those patterns और आपको इसलिए low feel हो रहा है यार क्या है मेरे पास. I'm nowhere. But it's not like that. Once I give you the awareness, you'll go bang, bang, bang. Just wait and watch. And you're going to share phenomenal success story for sure in coming days, weeks, and months. ये सबके साथ होता है. It's not just with you. Once you get awareness about your patterns, you go bang, 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 and you do something phenomenal because you start loving yourself. Once you start loving yourself, then only you progress in life. Then only you become confident. Louise Hay wrote one book, You Can Heal Your Life. In that book, she shared it, I guess, in the first chapter or forward, that the only way you can build your confidence is to love yourself, is to accept yourself. But in order to accept yourself, you need to understand what exactly you are. वो ऋतिक रोशन का गाना है ना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं. So I'm going to give that answer. आप ऐसे क्यों हो?
बिकॉज ये सवाल मुझे भी था when I had this question, why I am like this, my brother is like this, but why I'm behaving like this? And then I did a lot of research and I got to know who exactly I am. And then I'm really comfortable in being myself. Earlier, I wasn't. Let me be very blunt. Earlier, I wasn't. I was comparing myself with a lot of people and I was always down. But once I got the clarity, I'm quite comfortable in myself. And this is how I create impact. This is how you can create impact. I hope you got the answer. Go ahead, my dear friend. The last question of the day, in case you have any other question, my dear friend, just raise your hand. Just raise your hand. Let me know if you have any question. Sachin ji. Okay, Ronak. Oh my God. Love you, baby. Ronak is my best friend because he asked me some unbelievable question. I'm always waiting कि यार रौनक आएगा रौनक लाएगा और हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में रौनक लाएगा. So रौनक रौनक लाओ यार अभी आप चौका मार दो छक्का मार दो लास्ट बॉल पे. ओके सो हेलो एवरीवन मेरा आवाज आ रहा है सर? Yes, yes, I can hear you, my dear friend. Go ahead. ओके सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जब मैं अपने अभी मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ एंड अभी जॉब्स ढूंढ रहा हूँ. Yep. सो जॉब प्रोफाइल देखते वक्त लाइक हम लोग के अंदर क्या स्किल्स है वगैरह उसके अकॉर्डिंग हम लोग को जॉब प्रोफाइल देखना रहता है. सो Okay. जब मैं पूछता हूँ खुद से कि मेरे अंदर क्या स्किल्स है तो बेसिक जो स्किल्स है वो लॉजिक एल्गोरिदम बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग न्यू टेक ये Yeah. सब आता है. एंड देन द सेकेंडरी स्किल्स कम जो टूल स्पेसिफिक होते हैं Yeah. जैसे मैटलैब पीसीबी डिजाइन Right, right. सोल्डरिंग Yeah. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो ये जो सेकेंडरी स्किल्स है दे आर ऑल लाइक आई पर्सनली फील कि बेस्ड ऑन my fundamental skills of logic, Yep. algorithm building, and tech. So, like जब मैं जॉब सिलेक्ट करने जाता हूँ सो आई डोंट फील कि ये जॉब मैं कर नहीं सकता बिकॉज मुझे इसका टेक पता नहीं है. सो लाइक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर मैं कौन सा जॉब चूज करूँ जिसमें पहले से ही मुझे नॉलेज है या फिर बिकॉज नए करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइक आई एम कंप्लीटली कंफर्टेबल फॉर सच जॉब्स. एंड लाइक ये फ्यूचर में भी होता ही रहेगा व्हेन आई गो ओवर थर्टीज फोर्टीज कि मुझे ऐसा लगेगा कि और कुछ करना है और कुछ करना है बट लाइक कि एक जगह पर रुकना कहाँ पर है वो मुझे एक बार समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं लाइफ गोल बना सकता हूँ 40-50 साल आई विल ओनली वर्क ऑन दिस. तो वैसा कैसे पता चले Okay. अपने को? Okay. Okay. Great. So, my dear friend, first of all, let me tell you. Uh, my God. Most of the freshers have this question. यार मेरे पास experience नहीं है. How can I do this work? मेरे को बताओ यार. जन्म से कौन experience लेके आता है? Is there any person who has got experience by the birth? No. नो. And first of all, let me tell you, whenever you join any company as an engineer, they train you for minimum 6 months to 1 year. Whatever technology they have, whatever system they have, whatever software they have, whatever tools they have, they give all the training for it for 6 months to 1 year. या So, what you should focus upon, my dear friend, is upon your primary skills, which you clearly mentioned. You need to strengthen your logic a lot. You need to strengthen your belief a lot. This is what you need to work upon. ओके. बिकॉज यार हर एक कंपनी में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. इवन इफ यू स्विच जॉब्स, अगर आप स्विच भी मारते हो कोई नई कंपनी में जाते हो आपको ट्रेनिंग दी जाती है. आपको पहले दिन से कोई काम पे नहीं लगा था. मैं भी बहुत डरा था यार. आई स्टिल रिमेम्बर, यू नो व्हाट, व्हेन आई ज्वाइन कंपनी ब्लू स्टार लिमिटेड, जो पहला दिन था ना मेरे को बहुत डरा दिया था यार लोगों ने. आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, इनोवेशन लाओ, ये R&D है, ये करो. यार मैं बोला मेरे को जॉब करना ही नहीं है. मेरी सलाह औकात ही नहीं है. ये मैं नहीं कर पाऊंगा यार. क्यों मैं फालतू में फंस गया हूं. तो मैंने घर पे आके मेरे पेरेंट्स को बोला यार मेरे को माफ कर दो और मेरे को जॉब को नहीं जाना है. ये बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऐसा करो ऐसा करो. मैं कैसे कर पाऊंगा यार. पता ही नहीं है कैसे कुछ करना है.
मेरे पेरेंट्स ने बोला तू जाते रहे, बहुत ज्यादा पंगा हो गया तो आगे देखा जाए। फिर बाद में मैंने बहुत दिल पे पत्थर रखे, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, जाते रहा, और बाद में पता चला ये तो फुद्दू आइटम है यार, फालतू में मेरे को डरा रहे थे, ये तो कितना इजी है यार, क्यों डरा रहे थे मेरे को ये लोग। ऑब्वियसली आई कैन टेक ऑन चैलेंजेस, आई कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग रॉन्ग, लेकिन क्यों डरा रहे थे मेरे को, ऐसा है वैसा है। तो ये होता है रौनक, और आपका जो पर्सनैलिटी है, यू आर टू मच इनटू एनालिसिस एंड स्टफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो पर्सनैलिटी का पैटर्न है यार, यूजुअली आपके पर्सनैलिटी के लोगों का सेल्फ इमेज जो है ना, इतना पावरफुल नहीं होता। सेल्फ इमेज मतलब आप ग्रेट होने के बावजूद आपको लगता है मैं फुद्दू हूं। That is one of the challenge with the personality you have. So I just want to tell you, Ronak, I can write on a stamp paper with my signature. हम लोग नोटरी भी करने जाएंगे, चाहिए तो आपके डैड को लेके जाएंगे। आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड, यू आर गोइंग टू रॉक इन द इंजीनियरिंग, you are going to rock in the job. I'll tell you why, because I have seen your fingerprints, I have seen your patterns, and you are tailor made for engineering. Tailor made का मीनिंग समझ में आ रहा है? Yes, yes. You are tailor made man for engineering. जैसे T20 क्रिकेट में कौन सा क्रिकेटर टेलर मेड होता है, जो चौके छक्के मारने में माहिर होता है। Yeah. तो उसी तरह से आप इंजीनियरिंग के लिए टेलर मेड हो, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी, अभी भी मेरे को याद है यार, आपके ये दोनों फिंगर है ना, ये इंडेक्स फिंगर, हाँ, ये दोनों में रिवर्स पोटेंशियल है, राइट। हाँ. आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूल सकता, Okay. मैं नहीं भूल सकता, बिकॉज ये जो पैटर्न है मेरे भाई, यकीन करो हाँ. मेरे पे, दुनिया में सिर्फ 1% लोगों के पास है। Okay. ये समीर नारद ने हजारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स देखे पूरी दुनिया भर के, और ऐसा पैटर्न किसी में दिखता ही नहीं है। Only 1% people has got this pattern. So you're born for creativity, innovation, asking some unbelievable questioning the systems, doing something out of the box. This is what you're born for, and you're tailor-made for engineering. And I'm damn sure you will do something great and awesome. And I pray to God you will come up with some amazing patents, and you will help our India grow. Yeah. That's it from my side. Any other question? Yeah, sir. Yes, yes. So like अब यही like problem यही पर आता है कि I just feel I can do anything. Yep. So why just limit myself to only just one thing? And Okay. अगर वो लिमिट करना है तो वो कौन सी चीज चूज करूँ, वहां पर Yeah, प्रॉब्लम see, होता है. that's there. For this, I would say, देखो अभी इसका मैं आपको लॉजिकल आंसर भी दूंगा और सबकॉन्शियस बेस्ड भी आंसर दूंगा। लॉजिकल आंसर ये है कि आपके फील्ड में अभी आने वाले सालों में कौन सी सॉफ्टवेयर्स में बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट होने वाला है, यू कैन फोकस अपॉन दैट, यू कैन आस्क सम सीनियर्स, यू कैन डू सम रिसर्च, दिस इज वन एस्पेक्ट, ओके, लॉजिकल एस्पेक्ट। एंड another subconscious aspect is you can keep on doing one affirmation, I am divinely guided. I'm divinely Yes. guided. Maybe you can do another affirmation, like you can pray to God or universe or nature that use me as an instrument and help the humanity. Hey God, hey nature, hey universe, use me as an instrument and help the humanity. I don't know what is the best for me, so please take me where I can be best fit, where I can add great value. And thank you so much for guiding me. This is how you can pray every day. So both the things you can check out, the logical stuff and this subconscious stuff, and you will be going in the right direction. Got it? Yes. Any other question? No, sir. Great. Ronak, congratulations for completing engineering. I'm really proud of you. Take care. Yeah. चलो, यहाँ पे रौनक ने भी ये क्वेश्चन आंसर में जाते जाते 4 6 मार के रौनक लाई है. So my dear friends, that's it from my side today. See you in the next question answer session. Till then, God bless you. Enjoy. Take care.